Use of figures of speech in the poem Aunt Jennifer's Tigers. अक्सर बोर्ड एग्जामिनेशंस में जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनमें पोइटिक डिवाइसेस के यूज को पूछा जाता है और अक्सर स्टूडेंट्स ठीक से जज नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैंने आंट जेनिफर्स टाइगर्स में लगभग जितने भी पोएटिक डिवाइसेस और फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल एड्रियन रिच ने किया है उसको विस्तार से डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ। वैसे जो पोएटिक डिवाइसेस मेनली इसमें इस्तेमाल हुए हैं उनमें से कुछ हैं इमेजरी, सिंबॉलिज्म, एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर, हाइपरबली एंड सिनेक्टिक। We see the example of imagery here in bright topaz denizen of a world of green and massive weight of uncle's wedding band. They depict the stark contrast between Aunt Jennifer's inner desire and the reality of her oppressive marriage. Besides, we find symbolism in the poem, and the tiger embroidered by Aunt Jennifer symbolizes her desire for freedom and empowerment. They embody the strength and fearlessness that she lacks in her own life. The massive weight of Uncle's wedding band symbolizes the weight of social expectations and the oppressive nature of marriage. इसके अलावा फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वुल में फिंगर फ्लटरिंग यहाँ पर एलिटरेशन का इस्तेमाल किया गया है। एंड इफ वी टॉक ऑफ personification, the tigers are personified in this poem as prancing and proud, imbuing them with a sense of life and vitality. This contrast with Aunt Jennifer's own subdued and controlled existence serves to emphasize her longing for freedom. Massive weight of Uncle's wedding band में पोएट ने हाइपरबली फिगर्स ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया है और इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि कोई भी वेडिंग बैंड इतना वजनी और इतना भारी नहीं हो सकता। ये पोएट ने एक एग्जेगरेशन का इस्तेमाल किया है। एंड सो in case of massive weight of uncle's wedding band, that it is so heavy that it keeps suppressing Aunt Jennifer, and therefore the figures of speech used here could be said hyperbole. Last stanza, when Aunt is dead, her terrified hands will lie still ringed with the ordeal she was mastered by. In terrified hands, we find two figures of speech. One transferred epithet. Like terrified hands, in fact, where terrified epithet has been transferred to hand, although it is the aunt who is terrified. So, in that way, it could be called a transferred epithet. And another figures of speech that we can name is synecdoche. How? The poet says when Aunt Jennifer is dead, her hands will still be terrified. Of course, it's impossible for hands to be literally afraid. This is synecdoche, or using apart Aunt Jennifer's hands to represent the whole, or Aunt Jennifer's self. So, in this way, in terrified hands, both the figures of speech could be accepted. One is transferred epithet and another is synecdoche. तो इस तरीके से मैंने प्रयास किया है कि आपको ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स में जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच इस्तेमाल एड्रियन रिच ने किया है उसको एक्सप्लेन कर आपको समझा सकूं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन इवन in case it comes in your paper, you will be able to solve the question